और वहाँ पर न्यूयॉर्क में, वहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी हरिनाम पार्टी होती है, वहाँ पर 2 साल तक उसके वाइस प्रेसिडेंट थे प्रभु जी। और तत्पश्चात 2020 में वो अटलांटा में जो लाइफ टेम्पल है, कृष्णा लाइफ टेम्पल, उसका आरंभ भी उन्होंने किया, उसका शुरुआत उन्होंने किया, वहाँ सेंटर नहीं था, तो प्रभु जी और भक्तों ने मिलकर वहाँ सेंटर किया और इस समय वहाँ पर बहुत का प्रचार हो रहा है। और वहीं के प्रभु जी के साथ एक पद में आप जानते होंगे महोत्सव प्रभु जितना स्वामी ने यहाँ पे दास किया था, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पुस्तक का वर्णन करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तक का वर्णन वो भी प्रभु जी के साथ में वहीं पर उसी सेंटर में है। और तत्पश्चात फिर अभी भी समय प्रभु जी जो है वहाँ पर करेंटली वहाँ के वो प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर सेवा कर रहे हैं उस मंदिर में। और बहुत प्रचार हो रहा है वहाँ पर, इसमें काफी वहाँ पर कर्मचारी भी हैं, बता रहे थे वहाँ पर हर साल 3-4 कर्मचारी वहीं के लोकल जो है वो बनते हैं वहाँ पर और उनके लिए होते हैं। तो इस समय आज की डेट में पूरे अमेरिका में कह लीजिए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में कह लीजिए, सबसे ज्यादा विकसित जो मंदिर है आज की डेट में प्रगति हो रही है इस मंदिर में। तो हम से बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सब मिलकर प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरिया देश में भगवान के नाम का आशीर्वाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे विनती कि अपने मोबाइल पर आप लोग साइलेंट कर लीजिए, वो बड़े बिना किसी व्यवधान के रहना चाहते हैं। ऐसे जयराधा माधव ओके करता जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचार्यम्, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी,
रमन साजे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम Canto 1 Chapter 13 Text 2 यावता कृतवान् प्रश्नान् क्षता कौशारव अग्रतः जात एक भक्तिः गोविंदे तेभ्यः च उपरराम यावत कृतवान् प्रश्नान् यावत कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः तेभ्यश्चोपररामः यावत् कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः यावत् कृतवान् प्रश्नान्
क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। Please repeat. यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। माताजी यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। माताजी यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे Actually, since it's a Hindi class, you want to read translation purpose Hindi or should I read it in English? यावतः कृतवान् उन्होंने किए प्रश्नान् प्रश्न क्षता विदुर का नाम कौशारव मैत्रेय का नाम अग्रतः की उपस्थिति में जात बड़े होकर एक एक भक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा गोविंदे भगवान कृष्ण की तेभ्यः अगले प्रश्नों के संबंध में च तथा उपरराम विराम ले लिया
हा भूतकाल में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तात्पर्य विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थापित होना है, जो गोविंद है, अर्थात इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है, किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य में लगा देता है, किंतु इन सबसे उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है, सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। विदुर के समान ही जिज्ञासु भक्त जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और न उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके, विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण वंदे ईश भक्तान ईशान ईशावतारकान तत्प्रकाशां तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम्। यावता कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशालवाग्रतः जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। After asking various questions and becoming established in the transcendental loving service of Lord Krishna, Vidura retired from putting questions to Maitreya Muni. So here, this is the beginning of the chapter where Vidura will inspire Dhritarashtra to quit his house.
तो अभी हम लोग इस ध्यान में देखेंगे किस प्रकार से विदुर धृतराष्ट्र को प्रेरित करेंगे ध्वज छोड़ने के लिए। And here we see that Vidura is just returning after accepting Maitreya Muni as his spiritual master. और विदुर अभी वापस आए हैं, मैत्रेय मुनि को अपना गुरु से ज्ञान ग्रहण करके वापस आए हैं। And it's interesting to see the parampara system here because Maitreya Muni also had a spiritual master. तो ये बहुत रोचक है, हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा, कि मैत्रेय मुनि उनके भी गुरु थे। So who is that? कौन है वो? Uddhav, right? उद्धव जी। So Uddhav was present when Krishna had disappeared from this world. जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तब उद्धव वहां पर विराजमान थे। And at that time, Uddhava asked so many questions to Lord Krishna, which forms the majority of the 11th canto of the Bhagavatam. उस समय उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे भगवान श्री कृष्ण से, जो कि ज्यादातर भाग उसका श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में देखने को मिलता है। That those instructions are called as Uddhava Gita. और उन निर्देशों को भगवान के बीच का संवाद होता है, उसको उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। And we can understand this Uddhava Gita is nothing but Krishna's own expanded version of Bhagavad Gita. और उद्धव गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो भगवद गीता जो अर्जुन को सुनाई थी, उसी का विस्तारित स्वरूप है। So Maitreya Muni is pregnant with the instructions that he has received from Uddhava. तो मैत्रेय मुनि जो है उस समय वो भी उपस्थित थे वहां पर, उन लोगों से जो ज्ञान ग्रहण किया था। And now he is imparting that to Vidura. और अब वो विदुर को वो ज्ञान दे रहे हैं। And here the main subject matter that Srila Prabhupada is saying is, at what point does the disciple stop making many inquiries to the spiritual master? और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस बिंदु पर शिष्य प्रश्न पूछना गुरु से बंद कर देता है, कब तक प्रश्न पूछना, कहाँ पर बंद करता है। So you see, when as a human being, one of the first things we do, actually, it is we try to seek knowledge. मनुष्य योनि में आने के पश्चात हम देखते हैं कि हम सब ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। Even children, they acquire knowledge. जैसे बच्चों को देखें तो वो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं। An infant acquires knowledge also. और यहाँ तक कि भ्रूण में जो छोटे बालक हैं, छोटे, वो भी अभी ज्ञान ग्रहण करते हैं। People think that acquiring knowledge means you have to read books or something like this or hear something. लोग समझते हैं कि ज्ञान ग्रहण का अर्थ है कि हमें कुछ पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए या कुछ श्रवण करना चाहिए। But Srimad Bhagavatam informs us that there are knowledge acquiring senses that help us acquire knowledge. श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। The eyes, the ears, the nose, the skin, these are different means by which we acquire knowledge. जैसे आँख, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, इससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। And the child, the infant, as soon as it's born, it acquires knowledge by seeking out the breast of the mother and realizes that this is my mother. जैसे छोटे बिल्कुल अभी देखते हैं वो किस प्रकार से वो माँ का स्तनपान करते हैं, उनको भी ज्ञान है कि यही मेरी माता है, ये ज्ञान वाले हैं। And before it acquired knowledge about it, before it did anything, it first acquires knowledge and develops that strong relationship with the mother. और कुछ भी करने के पहले सबसे पहले उनको अपने माता के साथ में छोटे बालक का बहुत प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाता है। This is why breastfeeding of children is very important, because the child should become firmly established in relationship with the mother. This is very important. इसीलिए स्तनपान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बालक अपनी माता के साथ में बिल्कुल दृढ़ता के साथ उस संबंध को स्थापित करते हैं। Nowadays they just give bottles to babies.
आजकल तो लोग दूध के बोतल में जो है बोतल से दूध पिलाते हैं, but they don't understand a very key element that becomes missing in the child's, development of consciousness. और समझ नहीं पाते हैं कि इसके द्वारा उनकी चेतना में कितना परिवर्तन आ जाता है। So, and then after developing such attachment to the mother shows the father. और इस प्रकार से माता के साथ में संबंध स्थापित होता है तो माता फिर को बच्चों को ज्ञान देती है। So, and then as the child grows up also, continuously keeps asking questions. और जैसे ही बालक बड़े होते जाते हैं वो लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। Actually, a naughty child is a sign of someone being intelligent. और यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, खुरापात करते हैं, वो बुद्धिमत्ता का लक्षण है। Because as the child's different senses start to develop, it starts to try to acquire knowledge in all those senses. कि जैसे ही उनकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं, वो सभी ज्ञानेंद्रियों से बहुत ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। The first sense that a child develops for its sake of survival, even before its eyes or ears, is the tongue. सबसे पहला जो उनकी इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो क्या है? वो है जीवा, जिसे वो दूध का पान करते हैं। That's why children, whatever you give them, initially they put everything in their mouth. इसे छोटे बच्चों को आप कुछ भी दीजिए, वो थोड़ा मुंह में डालते हैं। Because that's how it's trying to acquire knowledge of something. What is this? And put it in my mouth. Because that's how I acquire knowledge. क्योंकि उनके पास उस समय एक ही ज्ञानेंद्रियां बहुत विकसित होती हैं, वो है जीवा। कुछ भी देंगे तो वो देखेंगे कि क्या है भाई, खाने की चीज है कि पीने की चीज है, तो वो डालेंगे उसको। So then as the eyes develop, as the ears develop, it starts to use that. और तत्पश्चात उनकी कर्ण, नासिका, दृष्टि, ये सब उत्पन्न होती है। And so you can imagine, as the child is growing up, all these different newly acquired methods of knowledge becomes available to that child. और जैसे इस प्रकार से बालक बड़े होते आते हैं, उनके लिए बहुत से ज्ञान के जो विषय वस्तु हैं, वो उनके लिए ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हो जाते हैं। And an intelligent child is trying to use all of it at the same time. और जो बुद्धिमान बालक है, वो सभी इंद्रियों को एक साथ उपयोग करते हैं। So it becomes very naughty. और इसलिए वो बहुत खुरापाती हो जाते हैं। But that's why, traditionally they would say that, if a child is somewhat naughty, it's good because he's active, he's intelligent. पहले लोग अगर कोई बालक ऐसे खुरापाती आ रहा है, वो तो ये बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि सब इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। Because if a child is just sitting there in a corner and doing nothing, then it's not very intelligent because it's not acquiring knowledge. अगर कोई शांत बिल्कुल छोटा सा बालक नहीं बैठा हुआ है, तो वो बुद्धिमान नहीं है, उसको कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकता, बैठा हुआ है। And therefore, in Chanakya Pandit also says that up till the age of 5, you let your child do whatever he wants. इसे चाणक्य भी कहते हैं कि 5 वर्ष तक जो है बालक को जो करना है करने दीजिए उसको। And then discipline the child between the age of 5 to 15. और 5 से 15 के बीच में उनके ऊपर अनुशासन सिखाई। And then after the age of 15, you treat him as your friend. और 15 वर्ष के पश्चात उनको अपने मित्र के रूप में व्यवहार करें। So up till the age of 5, it's acquiring knowledge. Let him develop that culture. Let him use his senses to acquire knowledge. Let him go on with it. 5 वर्ष तक उसको जो भी करना कर लीजिए, उसमें उसकी ज्ञानेंद्रियां विकसित हो रही हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो करना कर लीजिए। And you tolerate it. और अगर कुछ गड़बड़ी होनी है तो उसको आप सहन करेंगे। And then from age of 5 to 15, you have to be strict. और 5 से 15 के बीच में आप थोड़े से आप कठोरता के साथ में पालन करेंगे, अनुशासन करेंगे। Because now you have to teach him how he has to regulate that acquiring of knowledge. क्योंकि आप उनको सिखाना है कि जो उनकी इंद्रियां विकसित हो रही हैं, कैसे उसे ज्ञान ग्रहण किया जाए। Because there is one sense organ which hasn't developed at the age of 5 until puberty. क्योंकि 5 वर्ष तक जो है एक हमारा जो इंद्रिय है वो विकसित नहीं होती है। And although the knowledge acquiring senses are there, the senses which are used to perform work, karma, right? These are not become so active yet. क्योंकि अभी जो कर्मेंद्रियां हैं वो उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई हैं। Karmendriyas are hands, legs, all these different things. The karmendriyas are there, including the evacuating organs and the genitals. जैसे हमारे हाथ, पैर, हमारे जननांग, ये सभी कर्मेंद्रियों में आते हैं। And
A child is not independently capable of using these things to maintain himself. और अभी तक 5 वर्ष की आयु तक बालक के अंदर वो कर्मेंद्रियां उतने सुंदर रूप से विकसित नहीं होती हैं, इसीलिए वो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं. So he's got knowledge acquiring senses, but he's not got, the karmendriyas have not become fully developed. ज्ञानेंद्रियों के पास में है, लेकिन कर्मेंद्रियां अभी पूर्ण विकसित नहीं है. Now these karmendriyas, karma has to be regulated. लेकिन इन कर्मेंद्रियों को अब आगे वाले जीवन में 5 से 15 वर्ष में हमें सिखाना होगा कैसे कर्मों को हमको नियमित करना है. Because if karma is not regulated, you become caught in the terrible cycle of sin and birth and death. कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं और वो कर्म हमको नियमित क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं ज्ञात होगा, कर्म बंधन में बहुत गंभीरता के साथ में फंसते जाएंगे. So therefore, before the karmendriyas are developed, the child is taught how to regulate his behavior. इसलिए कर्मेंद्रियां जब तक पूर्ण विकसित हो रही हो, उसके उसी साथ साथ में हमको कैसे कर्मेंद्रियों को नियमित करना है, कर्मों को करने के लिए सिखाना होगा. So then by the time he becomes grown up, by the time he reaches teenage years and all his senses are developed, especially the sex organs, he knows how to control them. और इसलिए जब तक उनके इंद्रियां कर्मेंद्रियां विकसित होती हैं, विशेष रूप से चलना में, तब तक वो समझ जाते हैं उनके माता पिता के द्वारा कि हमें कैसे इसको नियंत्रित करना है, कैसे नियमित करना है. And so this is Vedic culture. This is how, Gurukul system was established. This is because it's based on a completely different concept of life. तो इसी प्रकार से गुरुकुल की ये जो योजना है, गुरुकुल में इसी प्रकार से बालकों को इसी प्रकार से शिक्षा दी जाती है कैसे वो अपने कर्मेंद्रियों को नियमित करें. And the aspect of acquiring knowledge, that is not restricted in Vedic culture. और ज्ञान ग्रहण करने की जो इंद्रियां जो है, ज्ञान ग्रहण करने की जो इंद्रियां है, ज्ञान ग्रहण करने का जो भाव है, उसके लिए कोई रोक. That the process of acquiring knowledge is encouraged. और ज्ञान ग्रहण करने के लिए बड़ा प्रेरणा दी गई है, प्रोत्साहित किया गया है. But too much engagement in karma is discouraged. लेकिन कर्म इंद्रियों का बहुत ज्यादा उपयोग उसको प्रोत्साहित किया गया है. Modern culture, they discourage you from acquiring knowledge and tell you to work hard. और जो आधुनिक समाज है, इसी उसका विपरीत है कि आप ज्ञान कम ग्रहण करो, काम खूब करो. That's animal life. ये पशु का जीवन है. See, animals also, one can argue, well, animals also acquire senses. क्योंकि पशु के पास knowledge. उनके पास भी ज्ञान ग्रहण करने की विधि है. They also acquire knowledge. They also acquire, okay, this is what I should eat. This is where I should go and get my food, whatever. वो भी देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कहाँ से अपने को बचाना है, कहाँ से आहार लेना है, वो भी पता है. But it acquires knowledge to execute its karma or activities without restriction. लेकिन वो जो करते हैं, ज्ञान जब ग्रहण करते हैं, तो उनके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होता. Like an animal, it doesn't have a sense that I must restrict myself. It will only, to whatever extent its body will allow it to engage in sense gratification, it will engage in sense gratification. उनके कभी यह भाव नहीं आता कि मुझे अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, आत्मनियंत्रित होना चाहिए. नहीं, जब तक उनके शरीर को भोग करने के लिए मिल रहा है, वो भोग करते रहेंगे. ये पशु वृत्ति है. A pigeon does not think, oh, I had too much sex yesterday, maybe today I should reduce a little bit. ऐसे नहीं सोचते हैं वो लोग, कह रहे मैंने बहुत ज्यादा कर किया है, आज नहीं करना चाहिए. ऐसा भाव नहीं है. Many animals, they eat a little bit here and there and they leave the rest. बहुत से जो पशु होते हैं वो थोड़ा बहुत खाएंगे, बाकी सब ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे करते रहते हैं. Especially you can see rats. They will eat something here, something there, everything. They won't eat everything that they touch. They'll eat little here, eat little there, waste everything. चूहा देखिए आप, थोड़ा गुजरेगा, बस गुजरेगा, उसको छोड़ देगा, गुजरेगा, उसको छोड़ देगा, सब चीज़ को खराब करता रहता है. So it doesn't think, oh, actually yesterday I bit this bag of whatever poha, but today I should finish it. उसने ये भाव नहीं कि देखो कल मैंने ये वाला जो बैग था इसमें से मैंने निकाला था चावल, आज पहले इसी बैग को खत्म करता हूँ. ऐसा भाव it doesn't.
it doesn't, see, the knowledge is acquired only to the extent where it can enjoy its senses without any consideration of restraint. That's the point I'm trying to make. तो उनके अंदर, पशुओं के अंदर ये वृत्ति नहीं होती है कि समझ पाए ये चेतना कि कैसे कहाँ पर हमको कंट्रोल करना है, नियमित करना है, नहीं होता। If you compare it with modern education and modern civilization, this is exactly what people are doing. इसको तुलना करें अगर आज के आधुनिक समाज से, आधुनिक जो ज्ञान है, बिल्कुल इस प्रकार से। People acquire knowledge to earn money. आजकल लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं धन कमाने के लिए। But after you get money, spend it in whatever damn way you want to spend it. After you acquire money, spend it in whatever damn way you want to spend it. और कमाने के पश्चात उसको व्यय करिए, आप जहाँ करना चाहते हैं व्यय करिए। So there is, in fact, that is encouraged. Yes, you should spend money. और करिए आप, खर्च करिए उसको जहाँ पे करना है, इसे उत्साहित करना चाहिए। In fact, American culture especially, spend money that you don't have. वो कहते हैं कि इतना करो कि आपके पास पैसा नहीं बचे। Just find out where you can get a good credit card. और फिर आप देखिए कहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसे लेकर के फिर खर्चा करिए। Build your credit to the extent you can get a credit card so that you can spend the money that you don't have. और जितना आपके पास पैसा होता रहे उतना खर्चा करिए और पैसा खत्म हो जाए, इतना खत्म हो जाए कि आपको फिर से क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़े, ऐसा करिए। So this, I mean, I was shocked when I went to the United States how so many people live with basically nothing in their bank account. प्रभु जी जब बोले कि लगा तो देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, किस प्रकार का जीवन चल रहा है। That so many people, they lead day-to-day lives without even thinking about anything in the future. और रोज वो ऐसे इस प्रकार से भोग कर रहे हैं कि उनको पता नहीं कि मेरे पास कल क्या है कि नहीं, कल के लिए भविष्य में क्या होगा, कोई चिंता नहीं। It's not a sign of renunciation. ये त्याग का चिंता की चिन्ह नहीं है। Animals also, many of them, they won't think about their next meal. They ate today, that's how. क्योंकि पशु वृत्ति है, पशु भी आज खाएगा कल क्या खाएगा पता नहीं, उसके बारे में चिंता नहीं करता। The crow will come when it feel, animals, when they feel hungry, they will go and search for food. जब उनको भूख लगती है तो जाके खाना ढूंढना शुरू करते हैं। And just see how many millions and billions of animals are, every time they feel hungry, that's when they go to look out for food. They don't store anything. इसलिए ये पशु लोग कहते हैं कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं, जब भूख लगेगा सब घूमते रहते हैं खाने के लिए। And all these billions and trillions of animals find their food also. और सबको का भोजन मिल जाता है, करोड़ों करोड़ों जीव हैं, सबको का भोजन मिल जाता है। Just see, Krishna's amazing arrangement of this material world. इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इतना सुंदर ये भौतिक जगत का निर्माण किया कि सबको सब कुछ मिला। These millions and billions and trillions of animals don't think what they need to do to make sure that they get their next meal, but when they feel hungry, they go out and they get it. इतने करोड़ों करोड़ों जीव सोचिए आप, जो अलग-अलग योनियां हैं, वो सभी जीव कभी कुछ ऐसा नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या रखा हुआ है, क्या करोगे, धन मिल जाए खाने के लिए, नहीं। तो जाते हैं, वो मिलती है और भगवान की कृपा से सब कुछ को लेकर है, वो मिल भी जाता है। And this is the same situation wherever you go in the world. कहाँ पर भी आप जाइए पूरे विश्व में, That in Kuwait also, animals get their food. कि कुवैत में भी अगर यहाँ पर कुत्ते बिल्ली हैं तो उनको भोजन मिल रहा है। If you go to the US, they get it. अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ भी पशुओं को आहार मिल रहा है। India, you get it. भारत में भी मिल रहा है। Arey, forget, in the sea they get it. समुद्र के अंदर उनको भी मिल रहा है। In the sky also they find. ऊपर उड़ रहे हैं पक्षियों को भी मिल रहा है। So just see how perfect Krishna's arrangement is. अब देखिए भगवान श्री कृष्ण की योजना कितनी पूर्ण है कि जहाँ पर जो है जीव सबको सब मिल रहा है खाने के लिए। Then why are human beings struggling? Why are human beings struggling? तो फिर मनुष्य योनि क्यों संघर्ष कर रहा है? Because we are not meant to live like that. Because we are not meant to live like that. क्योंकि हम लोग उनके जैसे जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं बने हैं। That the human form of life is meant to acquire knowledge to restrain one's senses and inquire about supreme absolute truth. क्योंकि मनुष्य योनि अपने आप नियंत्रित भाव से अपनी कर्म इंद्रियों को रोक करके और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए योनि है। That we control our senses and using those senses we worship the master of senses, Rishikesh. अपनी इंद्रियों को
भोग के लिए रोक करके और इन इंद्रियों से भगवान जो ऋषिकेश है उनकी सेवा की। That when we do that, just like the animals are taken care, we also will be taken care. जब ऐसा हम करेंगे क्योंकि हम इसीलिए योनि हमको मिली है, तब जैसे पशुओं का ख्याल रखा जा रहा है भगवान के द्वारा, तभी हमारा ख्याल रखा जाएगा। The animals are not even worshipping Krishna. क्योंकि पशु तो जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पूजते नहीं, They don't engage in devotional service, bhakti, वो भक्ति योग में युक्त नहीं है, and still they are taken care. इंद्रियों का ध्यान रखा जा रहा है। They live purely selfish lives. देखा जाए तो पूरा स्वार्थी जीवन व्यतीत करते हैं वो लोग, But all these millions and billions and trillions of animals are taken care. लेकिन इतना करते हुए कि सभी जो करोड़ों करोड़ों जीव हैं सबका ध्यान भगवान रख रहे हैं। So what to speak of a living entity, of a human being who surrenders to Krishna and worships him? And yeah, go on. तो क्या कहा जाए जो भगवान की शरणागत है और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे जीव की भगवान कैसे कृपा करेंगे, सोचिए आप। So this is why, as a human being, it is very important for us to acquire knowledge. इससे बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन में होते हुए हमको ध्यान रखना। And the purpose of acquiring knowledge should not be to gratify our senses. और इस ज्ञान ग्रहण करने का उद्देश्य अपने इंद्रियों की तृप्ति नहीं होनी चाहिए। If one acquires knowledge for gratifying the senses, that is not called vidya, that is called avidya. अगर हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए, तो उसको विद्या नहीं अविद्या कहा जाता है। There's a famous school in Chennai called Vidya Mandir. चेन्नई में बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है, इसका नाम विद्या मंदिर, But it's actually Avidya Mandir. लेकिन ये अविद्या मंदिर है ये। That because they simply learn the culture of ignorance. क्योंकि वो समझते हैं वहां पर क्या सीखते हैं, अज्ञानता का संस्कृति सीखते हैं। They become two-legged animals. वो कोई पद पशु बन जाते हैं। But by becoming, okay, you can say, what is, I want to become two-legged animals, I will become two-legged animal. If somebody says like that. कह सकता है कि हम बनना चाहते हैं तो पशु, क्या हानि है इसमें? You will struggle in life. लेकिन तब आप बहुत संघर्ष करेंगे। You cannot be happy. You cannot attain the peace that even animals have. आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे, शांति नहीं मिलेगी जैसे कि पशुओं को मिलती है वैसे आपको। Because who can imagine in this world that they just go out and get their food and don't worry about their next meal? Who can imagine? और ऐसे कल्पना कर सकता है कि आप बस ऐसे अपना होते रहिए और आपको भोजन मिलता रहे। And therefore many people look at animals and become inspired also. Oh, this animal is more happy than me. कई बार लोग ऐसे पशुओं को देख करके ही पशुवृत्ति करते हैं, देखो पशु लोग कुछ नहीं करते हैं, पसंद है, हम भी ऐसे रहेंगे। I remember once one person had come to our Sunday feast class in Atlanta, and I had asked him, so what is the goal of your life? तो ये कहने की एक बार एक व्यक्ति वहां पर आया अटलांटा में, अमेरिका में, यहाँ पर प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं रविवार के दिन। तो फिर पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? He said, you see, I'm suffering so much anxiety and so many stress and so many problems. My aim and goal of my life is to become a squirrel. Squirrel. वो बोले कि मैं इतना चिंतित हूँ, जीवन में इतना परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गिलहरी बन जाऊँ। I said, Baba, why do you want to become squirrel? He said, every morning I wake up, I see the squirrels are happily running around. I'm not happy like them. So in this way, you see, we can try to be animals, but it's not possible. तो हम लोग सोच सकते हैं ऐसे, लेकिन संभव नहीं। And only humans are the only species that try to look at other animals and think, why can't I be like that? और मनुष्य योनि के पास ही ये सुनता है कि वो सोच करके देख सकते हैं क्यों मैं ऐसा नहीं बनता, क्यों ऐसा नहीं बनता। ये जिज्ञासा है। So many people have dogs as pets. So many people have dogs as pets. कई लोगों के पास में कुत्ते रखे हैं, पालतू कुत्ते। The dog doesn't think, oh, you are driving car, tomorrow I will also try to drive a car. तो कुत्ता कभी सोचता है कि देखो अपने मालिक का देख करके आपके पास कार है, मेरे पास भी कार होना चाहिए। कुत्ता ऐसे नहीं सोचता है। No, the animals don't look at human beings and try to do what humans are doing.
क्योंकि पशु लोग कभी मनुष्य को नहीं देख करके सोचते कि ऐसा मनुष्य कर रहा है वैसा मैं भी करूं, ऐसा मनुष्य नहीं सोचता। But humans are looking at animals and thinking, wow, they are so happy. लेकिन मनुष्य लोग पशु को देख के बोलते हैं अरे थोड़ा गहरी सोच से भी बन जाओ, ये पशु कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। That shows the animals are more satisfied than us. वो दिखाता है कि पशु जो है वो अपने जीवन में संतुष्ट है। Because neither do they have, okay, they don't have the capacity to think like that, but there is no need also. उनके पास हालांकि क्षमता भी नहीं है, लेकिन उनका आवश्यकता भी नहीं है। So, and the only reason human beings are able to think like that is not to become like animals, but is to actually advance to a higher position. We have the ability to think like this. हमारे पास क्षमता है कि इस प्रकार सोचने की, कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कैसे हम और ऊपर बढ़े, ऊपर चढ़ा लें। You see, we have different senses, and different animals they become victims of some particular sense organ. हमारे पास अलग-अलग इंद्रियां हैं और अलग-अलग जो पशु पक्षी हैं वो अलग-अलग ऐसे इंद्रियों से प्रभावित होते हैं। The elephant becomes captured upon the touch of the skin with the she elephant. The male elephant becomes captured because of a desire of wanting to touch the she elephant. जैसे हाथी जो है वो हाथनी के स्पर्श से तुरंत प्रभावित हो जाता है। That the deer becomes controlled by sound. जो हिरण है वो ध्वनि से नियंत्रित हो जाते हैं। And then you have the fish that is controlled by the tongue. जो मछली है अब देखिए वो आहार से क्या करते हैं वो जीवा के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। And so, but for the human, but see, the fish is controlled by the tongue, but it's not controlled by the ear or the skin. तो उनका खाली एक ही इंद्रिय, जैसे मछली है तो खाली वो जीवा से नियंत्रित होती है, लेकिन वो साउंड ध्वनि से किसी से नियंत्रित नहीं होती। A human being can fall down with all five senses. लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो पांचों की पांचों हमारी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां पांच से प्रभावित हो जाती हैं। But this is not a curse. This is not a curse. ये कोई शाप नहीं है। That these five senses have been given to us. They are so strong because we can use them to serve Krishna. ये पांच इंद्रियां जो बड़ी शक्तिशाली है, ये हमें इसलिए दी गई है कि इसको हम भगवान की सेवा में यूज करें। That using these five senses, we are able to offer things to Krishna that animals cannot offer. और इन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य योनि में हम वो चीजें भगवान को अर्पित कर सकते हैं इन इंद्रियों से जो पशु नहीं कर सकते। We can cook very nice things for Krishna. जैसे हम हाथ से बहुत अच्छा भोजन बना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। We can offer very fragrant flowers. बहुत अच्छे पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। We can decorate him very beautifully. बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं भगवान। We can, with these tongues, we can glorify him. जीवा से भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, वो गा के गुणगान कर सकते हैं। And we can sing for Krishna. हम भगवान के लिए गीत गा सकते हैं। So all these senses have been given for us so that we can serve Krishna. तो ये इंद्रियां हमको इसलिए दी गई हैं कि हम इसको बहुत गंभीरता से भगवान की सेवा में इसको भगवान को प्रसन्नता के लिए उपयोग करें। And when a living entity approaches a spiritual master and understands this, that this is the purpose of human life, I need to worship Krishna, then he has attained perfection of knowledge. जब मनुष्य जब जीव भगवान अपने आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंच करके साधु के पास पहुंच करके ऐसी जिज्ञासा करते हैं और भगवान की सेवा में युक्त होते हैं, तब वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करते हैं मनुष्य। And that service is done out of love. और वो सेवा प्रेम पूर्वक की जाती है। So that's where you come to the question of trying to ask about karma, jnana, yoga. Srila Prabhupada is making all these points here. और इस प्रकार हमें आध्यात्मिक गुरु के पास आकर के हम इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, कर्म, ज्ञान, उपाध्याय लिखते हैं यहाँ पर। Because people are inclined to worship God, but they are not inclined to worship him selflessly. तो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल निस्वार्थ सेवा ऐसे बहुत कम लोग हैं। That they don't think that they should worship him for his pleasure, rather they want to worship him for their pleasure. क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए,
ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता है, मेरा काम पूरा हो जाए। Because they don't understand who they actually are. वो समझ नहीं पाते कि वो कौन है। See, when a son realizes he has a strong relationship with his parents, and that relationship is very important to his identification as to who he is. जब पुत्र समझ जाता है कि मेरा बहुत गंभीर संबंध है, कोई तपस्या नहीं है वो। And such a is called, is a good child. He is Satputra. Because he serves his parents and he serves them selflessly. He'll get some inheritance. There are children who do that. They go and they make a show in front of their parents just so that they'll get a little money and their parents will buy them what they want. बहुत लोग हैं ऐसे भी संतान हैं जो माता पिता सेवा का दिखावे करते हैं, दिखावे के लिए, जब तक उनसे कोई धन की प्राप्ति हो जाए तब तक दिखावे के लिए सेवा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। And initially a child may be naughty and do these kind of things. शुरुआत में हो सकता है कि लोग ऐसे करते हैं जब तक हम अपरिपक्व हैं। But gradually he has to grow up and he has to become responsible. एक क्रमशः हमको परिपक्व होना पड़ेगा और हमको जिम्मेदार होना पड़ेगा। And he has to understand that the relationship with his parents is a lot deeper than just them being some providers. मतलब समझना पड़ेगा कि ये माता पिता खाली हमारे पास संपूर्ण तेरे लिए नहीं, ये संबंध बहुत प्रगाढ़ है, प्रेम का संबंध। That my parents don't exist simply to provide for my body till 18 and then I forget about them and do whatever I want in my life. मेरे माता पिता खाली बस हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हैं, वैसे मैं ध्यान रखूं और उसके बाद मैं भूल जाऊं, ऐसा संबंध नहीं होगा। Actually, this is how it is in the Western world. इसी प्रकार से हम देखते हैं पाश्चात्य देश में पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामान देते हैं। Children accept their parents as providing their needs. और बच्चे लोग अपने माता पिता को यही समझते हैं कि खाली हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं बस। And the moment the child becomes grown up where he is able to provide for his own needs, his relationship with his parents is more or less finished. और जैसे ही बालक बड़े हो जाते हैं, बालक बालिकाएं और अपना खुद का ध्यान रखना शुरू करती हैं, माता पिता और बालक के बीच में कोई संबंध नहीं। It's not very strong. They are very strong. तो ये कोई और उनके बीच में बहुत प्रगाढ़ संबंध नहीं हो पाता है। And therefore, it is very common to see in the Western world that old people, they live by themselves. पाश्चात्य देशों में क्या करते हैं लोग, वृद्ध लोग हैं, वो अकेले रहते हैं अपने माता बच्चों के साथ नहीं, बच्चे रहते हैं वो। And when the parents die, the children inherit the wealth, and that's it. और जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बालक लोग बस अपना माता पिता की संपत्ति है उसको लेते हैं, अपने तरीके से रहते हैं। See, this is also animalistic. ये भी पशु वृत्ति है। The dog, female dog, provides for her pups, all their needs. But the moment the pups grows up, she sends them away, and they also don't care about her. जैसे जो कुत्ता होता है, कुतिया होती है, उसके बच्चे जब होते हैं तो उनको दूध पिलाएगी, बड़ा करेगी। जैसे बड़े होते कुत्ते फिर वो अपने गली में अपना काम करना शुरू कर देते हैं, गली कुत्ते बन जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो भी माता ये पशु वृत्ति है। But bona fide spiritual master, he teaches us that this is all nonsense. और प्रामाणिक गुरु के संपर्क में जब मनुष्य गुरु में जब चीजें आते हैं तब उनको समझ में आता है और समझाते हैं कि सभी जो इस प्रकार के संबंध का जो आधार है ये सब that when we approach even Krishna with the attitude that we are the enjoyers, as long as we are like that, we will continue to suffer in material existence and we will continue to be dissatisfied. जब तक हमारे अंदर भोग की भावना रहेगी, चाहे हम कृष्ण भक्ति मार्ग के पश्चात भी भगवान कृष्ण के पास आ रहे तो अगर हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, भोक्ता समझ रहे हैं, तब तक हम कष्ट में रहेंगे। That in the processes of karma, jnana and yoga, the person is still contaminated with the desire that he is the enjoyer. और कर्म ज्ञान योग में अभी भी दूषित रहता है वो व्यक्ति, ये समझते हुए कि मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही भोग करूँगा। How is it possible? Because
if for instance in jnana they are seeking liberation from enjoying material activities. देखिए आप इस प्रकार से ज्ञान में वो मुक्ति की कामना करते हैं. So how can we understand that they are still thinking themselves as the enjoyer? कैसे समझ सकते हैं कि कोई मुक्ति की कामना कर रहा है कि फिर भी वो आनंद का भोग करने के बारे में सोच रहा है? Because they haven't accepted Krishna as the supreme enjoyer. क्योंकि अभी तक वो भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता नहीं माने. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam jnatva mam shantim richati, that this is the way to attain peace. क्योंकि ये शांति का ये रहस्य बताया गया है भगवद गीता में. That when we understand that Krishna is Bhoktaram, that he is the enjoyer of everything, enjoyer of all sacrifices, enjoyer of everything. भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर वही है. That when we understand that, and we understand that our position is to give him enjoyment. जब हम ये समझते हैं कि वही भोक्ता है, वही महेश्वर है और हमारा कर्तव्य केवल उनको भोग कराना है, उनको प्रसन्न करना है. We have been created, our existence is to give pleasure to Krishna. हमारा अस्तित्व ही इसीलिए है, हमको इसीलिए प्रकट ही किया गया है कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकें. But we are also very intimately related with him. और साथ ही साथ में हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है उनके साथ, उनके अंश हैं. Just like when a good child pleases his parents, ultimately he becomes blessed, he becomes happy. This is cultured understanding. जैसे ही कोई बालक अपने माता पिता की सेवा करते हैं गंभीरता से, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, वो बहुत आशीर्वाद मिलता है संस्कृति. And he doesn't think, right now I'm struggling, I'm suffering because my parents want me to do something. और वो कभी उनको समझ नहीं आता, ऐसे सोचते विचार नहीं करते कि देखो मेरे माता पिता ऐसा बड़ा करने के लिए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है. And it's not that, okay, because I'm suffering, right, I'll just give it up, because what is the use? मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, माता पिता की सेवा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं भाव. But if he's cultured, he understands, no, this will give me benefit in the long run. अगर वो संस्कृति में परिपूर्ण है, वो जानते हैं इस विषय वस्तु को, तो ऐसे लोग कभी भी अपने माता पिता की सेवा में. That performance of duty, therefore, that when karma is regulated, it is regulated on the basis of duty. And that you have to perform your duty irrespective of what the fruits may provide. And performance of karma performance of duty will give us benefit in the long run. और इस प्रकार से कर्तव्य का पालन करते हुए हमको ये लंबे समय में इसका बहुत लाभ है. This is true on the bodily platform. ये शारीरिक स्तर पर सत्य है. What to speak on the platform of the soul? तो आत्मा के स्तर पर क्या बात की जाए? That the Atma has only one duty. क्योंकि आत्मा के स्तर पर खाली एक ही कर्तव्य है हमारा. To please Krishna. जिसके हम अंश हैं, परमात्मा कृष्ण, बस उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना. And for that purpose, the Jivatma approaches a spiritual master who is already engaged in that duty. और उस कर्तव्य को पूर्ति करने के लिए जीवात्मा ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं जो पहले से ही इस कार्य में लगे हुए हैं. And he realizes the Guru is going to tell me so many things that is going to be difficult for me to do. और वो समझते हैं कि गुरु हमको बहुत सी चीज बताएंगे, ऐसी विधि में लगाएंगे जो विधि करना आसान नहीं होगा. But still he performs those activities because he understands that this will give benefit for him in the long run. ये जानते हुए कि इसमें कष्ट होगा, घटना जाएगी, कि फिर भी वो करना चाहेंगे कि जानते हुए कि यही मेरे श्रेय है, यही मुझे परम हित है, परम हित में है. But Lord Chaitanya is very merciful. Gaura Purnima is coming up. और गौरांग महाप्रभु और गौर पूर्णिमा आने वाला है. महाप्रभु बड़े दयालु हैं. That even the process is very pleasurable. उन्होंने पूरे इस विधि को भी बड़ा सरल कर दिया, थोड़ा कठिन था उसको भी सरल कर दिया. That it just when you begin Krishna consciousness, it gives happiness. जैसे हम विधि को करना शुरू करते हैं, आप देखिए कि हमारा बाल का ध्यान इसमें शुरू से ही आनंद है. So a disciple can put forward questions about karma, jnana and yoga and about everything else,
until he reaches the point of understanding that only unalloyed pure devotional service is selfless and is pleasing to Krishna. Until he reaches that point, he can ask questions. तो जब तक वो कर्म ज्ञान योग के ऊपर जिज्ञासा करते हैं, जब तक लेकिन वो प्रेममयी सेवा तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उनकी जिज्ञासा बनी रहती है, प्रश्न पूछते रहते हैं. But after understanding or after receiving that knowledge, if the disciple does not become submissive, the disciple does not engage in Krishna consciousness and simply goes on asking questions, he is insincere. लेकिन अगर ये ज्ञान यहाँ तक पहुंचे के पश्चात, प्रेम सेवा तक श्रवण करने के पश्चात अगर वो बहुत विनम्र भाव से उसमें युक्त नहीं होते, उसको अपनाते नहीं है और उसके बाद भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तब वो उनकी अगंभीरता का परिचय है. That the point is, we all have to reach a point where after that, we have to reach a point where we are performing service to the spiritual master more than asking questions to him. हम लोग को भी उस स्तर पर पहुंचना है कि जहां पर हम भगवान की सेवा में युक्त हो जाएं श्रवण करने के पश्चात, बजाय कि हम खाली बस प्रश्न पूछते हैं. Actually, the spiritual master, he is serving us by answering our questions. क्योंकि हमारे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, वो गुरुजन हमको हमारे उत्तरों को देकर के हमारी सेवा, हमारे कई प्रश्नों को उत्तर देकर हमारी सेवा कर रहे हैं. That is his humility. वो उनकी विनम्रता है. Actually, he doesn't have to serve us. आवश्यकता नहीं हमको हमारी सेवा करने की. We have to serve him. हमको उनकी सेवा करनी चाहिए. But Lord Chaitanya and his representatives, they are very merciful. चंद्र महाप्रभु उनकी प्रमाणिक पद्धति के बड़े दयालु हैं. That they know we'll never approach them. They know we will never approach them. तो वो जानते हैं कि हम उनके पास कभी जाएंगे नहीं. So they approach us. इसलिए वो हमारे पास स्वयं आते हैं. They give us prasadam. हमको प्रसाद देते हैं. They give us association of devotees. अपना संग लेते हैं, भक्तों का संग लेते हैं. They give us very nice kirtan that we can perform. कीर्तन करने के लिए उत्साहित करते हैं, नचाते हैं, गवाते हैं. And then we think, I'm enjoying. बात लगता है कि तो आनंद भोग रहे हैं. I'm enjoying very nicely. बड़ा आनंद मिल रहा है. This Krishna consciousness also is very enjoyable. इस हमारे में बड़ा आनंद का विषय है. And then spiritual master says, Baba, you're rascal, you're thinking you're enjoying. और तब महाराज कहते हैं कि देखो आप तो मूर्ख हो, आप सुन का कार्य तो हो कर रहे हो. Because until that point of time, we would not sit and hear him what he's saying. जब तक आप श्रवण नहीं कर रहे हो, बैठ करके उनसे विधि को नहीं समझ रहे हो, विधि को. So they give us this process by which we are brought, we are kind of trapped in a situation where we start hearing about surrender. तो इस प्रकार की विधि में हम लोग करते हैं जिसमें कि हम स्पष्ट पाते हैं कि हमको शरणागत लेना है, शरणागत होना है. Then we should become surrendered. और तब हमें शरणागत लेनी चाहिए. And we should perform service. और तब सेवा करनी चाहिए. And we should make ourselves useful to the spiritual master. और आध्यात्मिक गुरु के लिए हमको भी बड़ा उपयोगी बनना चाहिए उनके जीवन में. The best way to become useful to the spiritual master is to bring more people to him. और उनके लिए और उपयोगी बनना चाहते हैं कि और लोगों को भगवान के समीप लेकर आए. Just like we see Uddhava brought Maitreya Muni brought Vidura. जैसे उद्धव जी मैत्रेय मुनि को लेकर के आए, मैत्रेय मुनि विदुर को लेकर के आए. Now Vidura is going to bring Dhritarashtra. और विदुर जा रहे हैं धृतराष्ट्र के पास. So this is somebody who has reached perfection of knowledge. He understands, I need to serve my spiritual master, not just keep asking questions, but I need to perform service. विदुर को परिपक्व हो जाते हैं, भक्ति लोग समझ जाते हैं कि अब मुझे खाली प्रश्न नहीं पूछना है, अब मुझे बल्कि सेवा करनी चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए. I need to please him. मुझे उनको खुश करना चाहिए. And the best way to please the spiritual master is to spread the Krishna consciousness movement. और सबसे उत्तम उपाय है अपने आध्यात्मिक गुरु को खुश करने के लिए चित्त में कि और लोगों को हम भगवान कृष्ण से जोड़ें, और लोगों को Have these books of Srila Prabhupada distributed. वितरण करें. Create an environment whereby more devotees can come to Krishna consciousness. ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें जहाँ पर बहुत लोग आ सके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में. Which includes making prasadam and other things like that. जैसे कि प्रसाद की सेवा है और बहुत सेवाएं हैं, उसमें युक्त करें उनको. That this is the most important aspect of devotional service, that it is practically performed. ये बहुत महत्वपूर्ण ये भाग है अपनी सेवा का कि इसको
व्यवहारिक रूप से बड़े सुखपूर्वक किया जाता है। And in this way, we can become happy. और इसी प्रकार से हम प्रसन्न हो सकते हैं। So I'll stop here. If there are any questions or comments, please feel free to ask. यहाँ पर विराम देते हैं प्रभु जी, और इससे कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न हो सकता है। कोई प्रश्न जिज्ञासा किसी का आज के विषय पर? जी प्रभु। हरे कृष्ण महाप्रभु, चरणों में दंडवत प्रणाम जी। हमारा प्रश्न है कि शुरुआत में हम भक्ति शुरू नहीं कर रहे हैं, तो आप महाप्रभु जानते हैं कि हम लोग किस कल्चर से आते हैं, हमें सब्जी बनते रहती है, तो हम यानी हर चीज छोड़ चुके हैं, लहसुन प्याज का भी सेवन करते हैं और हमारी ड्राइवर से काम करते हैं। तो तुलसी माला कब से धारण करें और क्या भक्ति की शुरुआत कैसे करें? जो भी न्यू भक्त हैं हम लोग अभी आ रहे हैं 20-25 की संख्या में है, ऐसे हम लोग तुलसी माला कब पहनें? और आप जी सेवन कर रहे हैं जी सेवन कर रहे हैं प्याज लहसुन का भी चल रहा है। Question is, when can you wear kanti mala? That's the question. Because they're eating onion garlic. So you can wear kanti mala when actually Maharaj told us this. Bhakti Vikas Maharaj said you have to chant 16 rounds and follow 4 regulative principles. No onion garlic also. तो प्रभु जी भक्ति विकास महाराज बताते प्रभु जी बताने की वो कहते हैं कि 16 माला का जप करते हैं अगर आप, चांदी का पान करते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तब कंठी माला करेंगे। Because there are so many people who in Bengal who say, for instance, they eat fish and they wear kanti mala. बंगाल में बहुत से लोग हैं, तो वो लोग प्याज लहसुन की क्या बात कर रहे हैं, वो लोग तो मछली और भी वो शाकाहारी मानते हैं, जल सब्जी मानते हैं, और उसको पाते हैं और वो कंठी माला है। That we have to understand that in devotional service, it's not like a instrument, like you plug something into a wall, just like a tool, and it just works. ये भक्ति जो है इस प्रकार से नहीं है कि आप बस कहीं पर प्लग लगा दिया, आपने स्विच ऑन कर दिया, बस काम करना शुरू, ऐसा नहीं। That all these, like Tulasi Mala, Tulasi is a personality. तुलसी माला ही एक व्यक्ति विशेष है। She has a way in which she serves Krishna. उनका एक अपना अलग, उनका एक रास्ता पथ है जिससे वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। And if we want her blessings and her protection, अगर हमें उनकी कृपा चाहिए, उनकी रक्षा चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए हमको, then we have to do it in a manner that she accepts it. तो हमें ऐसे करना चाहिए कि जैसे वो उसको ग्रहण करें। That we cannot force spiritual personalities to give us mercy. हम लोग किसी भी आध्यात्मिक जो व्यक्ति विशेष हैं, जिन्हें हमें कृपा चाहिए, उनको हम कोई अपनी शर्त रख करके उनकी कृपा नहीं मांग सकते। It's not a mechanical process. क्योंकि ये कोई यांत्रिक विधि नहीं है। Okay, I'll just put Tulasi Mala and whatever I'm doing, I will still be protected. मैं तुलसी माला पहनूं, फिर जाकर प्रश्न करता रहूं और मुझे सुरक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं। And because in Krishna consciousness we understand everybody is a personality. क्योंकि ये सभी लोग जो भगवान की सेवा में हैं, सब व्यक्ति विशेष हैं ये। That people can say that they are devotees of Krishna, but devotee of Krishna means you have to follow Bhagavad Gita. तो ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं, तो भक्त का मतलब फिर भगवान श्री कृष्ण की बात को मानना चाहिए। So this is an important point to understand, that we have to qualify ourselves to receive the mercy. कि हमको योग्य बनना पड़ेगा उस भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, और योग्यता के अंदर जो चीजें आती हैं उन्हें करने के लिए। Prabhupada said, first deserve, then desire. प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले आप उसके लायक बनो, तब उसकी इच्छा करो। That at the same time, there are other ways in which we can receive mercy until we reach the stage that we want to reach. और इसके साथ ही साथ में और भी विधि है जिससे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि हम वहां पर नहीं पहुंच जाए। That by
taking advantage of what is available to us, then we will reach that stage automatically. जो हमारे पास है पहले उसका हम लाभ उठा करके उसका प्रयोग करके तब हम वहां पहुंच पाएंगे कि हमको चाहिए बस. If we take Krishna Prasadam regularly, naturally the taste of wanting to eat onion and garlic will go away. Actually, here I think nowadays we will compare during the time that is. Right. Okay. It's a little different. Okay. So anyways. तो उनके लिए हम कृष्ण प्रसाद लेना शुरू करेंगे जब भगवान कृष्ण प्रसाद तो उस समय के प्रसाद में इतना आपको रुचि आएगा कि आपको फिर याद सुनना बिल्कुल आपको उसका दर्द भी आएगा तो आप उसको दूर से वो नहीं देखना चाहेंगे. So anyways, I mean, other devotees can guide you. So many people have come to that point of wearing kanti mala. They will guide you and you can also wear. तो बहुत से भक्त हैं जो कैंप पे रहते हैं लेकिन वो लोग प्रसाद का ही सेवन कर रहे हैं और वो पहनते हैं. तो ऐसे हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पर ऐसी सुविधा है हम लोगों को प्रसाद मिल रहा है और हमारी इच्छा है तो निश्चित रूप से पहन सकते हैं. जिन्होंने बताया खाना नहीं. ठीक है. Hare Krishna. Prabhuji. At the end, you told any questions or comments. You can say in Hindi so that. हिंदी बोल सकते हैं. प्रभु जी आपने at the end आपने बोला कि any questions or comments, but again in between you were telling that आप बोल रहे थे कि if anybody is asking कोई question पूछता है तो वो insincere actually. Oh no, that's not right. Okay. Yeah, okay. So, go on. मुझे तो गीता का लिमिटेड नॉलेज है तो गीता वाज कंप्लीटेड इन चैप्टर 2 itself. Correct. चैप्टर 2 गीता का सार चैप्टर 2. Correct. बट अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. Correct. गीता 18 अध्याय तक चली गई. Correct. दो चैप्टर में भगवान ने उसको वाइड अप कर दिया था. तो क्वेश्चन पूछना जिज्ञासा अच्छी बात है मेरे हिसाब से. अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ इसका मतलब मुझे सब कुछ पता है एंड मैं यहाँ मेरा जरूरत नहीं क्योंकि मुझे सब कुछ पता है. मैं इधर आऊंगा लेके तो जैसा होना मेरे हिसाब से तो जरूरी है. Yeah. So anyways, thank you for asking. I'll clarify. तो ऐसा प्रश्न है और इसको उत्तर देंगे आप. So the point is, questions are supposed to be asked until we come to the point of surrender. तो ये प्रभु बताया और आपने ध्यान दिया हो ये था कि प्रश्न कब तक पूछना है. प्रश्न पूछने में बनाया नहीं है. प्रश्न पूछना ही हमको ऐसा करना ही है लेकिन कब तक जब तक हम शरणागत के असर पर नहीं आ रहे. And after that also, questions can be asked on how to keep that surrender, maintain that surrender and enhance that surrender. और उसके बाद जब प्रश्न होगा शरणागत के बाद जब मैं शरणागत हो गया उसके बाद प्रश्न आएगा कि कैसे मैं शरणागत में और उन्नति करूं कैसे शरणागत और अच्छे से करूं. ये सब प्रश्न है. But if after elaborate explanation and understanding that that one has to surrender and perform devotional service, if one continues asking what is the point, what is the point, what is the purpose, then one becomes insincere. लेकिन शरणागत के बारे में वहां तक पहुंचने के पश्चात भी उसके बारे में सुनने के पश्चात भी और फिर भी प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं क्यों शरणागति करना है और उसमें करने जा रहे हैं उसको वो प्रश्न गंभीर. See, generally spiritual master, he is merciful. He wants disciple to come to the point of voluntarily submitting himself to become a devotee. समान रूप से गुरुजन जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं चाहते हैं कि सभी शिष्य वो स्वतः शरणागत की ओर अग्रसर हों. Therefore, even after explaining 18 chapters of Bhagavad Gita, Krishna asks Arjuna, have you understood everything? Are your illusions dispelled? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता सुनाने के पश्चात में अंत में बोल रहे हैं कि आप सब समझ गए अपना विचार तुम्हारा ठीक है स्मृति आपकी वापस आ रहा है सब ठीक है. That if Arjuna wanted to ask more questions, Krishna was ready to answer. उस समय में भगवान श्री कृष्ण तैयार थे कि अर्जुन पर और भी कोई जिज्ञासा है प्रश्न है तो उसके जवाब आपके लिए. But a good disciple should understand that they should reach a point where he doesn't, because it becomes beyond a certain point, it becomes more of a trouble that you're simply asking questions for the sake of asking.
क्योंकि देखिए कुछ समय के पश्चात नम्रता क्रमशः बढ़ती जाती है और अर्जुन से बात करेंगे कोई प्रश्न नहीं, अब मैं बस आप लोगों से मांग करूंगा। तो शिष्यों को उस तरह आना चाहिए कि जब ये तत्व ज्ञान हो गया तो उसके बाद आप कैसे उनको पसंद करो, कैसे उनको सेवा करो, उसके बाद में जिज्ञासा करते रहना, गुरु को अपना समय देना, ये उनकी सेवा नहीं बल्कि ये उनके प्रति देखा जाए तो उनका समय नष्ट करना। We can ask question, same question one time, same question two times, same question three times, and generally spiritual master merciful, he will answer. जैसे कोई एक ही व्यक्ति 3 बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, समान रूप से गुरुजन जो होते हैं उत्तर देते रहते हैं, उत्तर देंगे देते रहते हैं। But beyond a certain point of time, it becomes apparent that the disciple is asking because he doesn't want to give up his attachment. लेकिन उस समय के पश्चात में ऐसे प्रश्न आते हैं, गुरु को ज्ञान करता है कि ये व्यक्ति कुछ त्याग नहीं करना चाहता है, बस प्रश्न पूछ रहा है, कुछ छोड़ना नहीं चाहता है जीवन में। And he is trying to see if the philosophy will let him accommodate his desire, material desire. और वो इसी प्रश्न करता है कि वो अपना कुछ छोड़े भी नहीं और उसको ऐसा उत्तर मिले कि वो अपनी आसक्ति के साथ में आगे बढ़ता रहे, ऐसा कोई उत्तर उनको दे, इसलिए वो सोचते रहते हैं, विचार करते हैं। At that point of time, it becomes a nuisance. तब ये एक प्रकार का अवरोध हो जाता है और ये अगम्भीर है। That time, that disciple is insincere और वो बहुत जो शिष्य है वो निश्चित रूप से गंभीर है, because he is not willing to accept what the spiritual master has said so clearly. क्योंकि वो जो गुरु कह रहे हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहते, उसको पालन नहीं करना चाहते। To some people, devote spiritual master, okay, do whatever you want, at least come and take some prasadam, do some devote service. लेकिन फिर भी बोल रहे हो तो बोले ठीक है, जो कर रहे हो कम से कम आ रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, कुछ एक हमारा जब कर रहे हो आते हो। And then such a disciple goes and says, spiritual master said, I can do anything. Spiritual master said, do whatever you want. He told me I can do whatever I want. और तब वो जाके बोलते कि देखिए मैं गुरु बोला है कि जो करना करो, करते रहो, आगे हम कर रहे हैं। So he goes around telling other devotees, my spiritual master has blessed me to do whatever I want. और जाके सबको बोलते हैं कि मेरे गुरु ने बोला है कि जो करना करो, आगे रहो। What can you do? तो क्या कर सकते हैं? Is that okay? गंभीर होना पड़ेगा आप सबको, ठीक है ना? दूसरी एक जिज्ञासा है, और ये कैसा? तो आपने प्रोविजन में बोला कि 5 साल तक इस बैंक को सभी माफ कर रहे हैं। As per law order also. That's Chanakya Pandit said that. As per law order also, 5 years if somebody is crime is not accept, there is no punishment. But in the Lord's kingdom, all we are child to the God. All we are child, small child. हाँ, So that's why हिंदी में बोल सकते हैं, then he doesn't have to translate. मैं समझ सकता हूँ. भगवान के लिए तो हम लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो और भगवान की बोलते हैं कि सबको माफ कर देते हैं। ये आप करने का सवाल कैसा है? भगवान उससे पहले भी बोला है। मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा. What is the question? You know that. Yeah, okay, but he's saying what पाप पुण्य? We all are in front of Krishna. We are small child only. So whatever we do, why is not? We are not such small children. See, we are not this kind. We are not that kind of innocent children. तो हम लोग उस प्रकार के मासूम बालक नहीं है, और साथ ही साथ में And even children, from the perspective of karma, they are not purely innocent either. और कर्मों के अनुसार देखा जाए तो शास्त्र बताते हैं कि वो पूर्ण रूप से कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं, बालक में भी कुछ किया गया। That they may not create karma until the age of 5, but they still have to suffer for whatever karma they did. हाँ, तो कोई वो कर्म और कर्म नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कर्म किया है उसके लिए उनको भोगना तो पड़ेगा। And the only reason why up to the age of 5 the child doesn't generate karma is because his body is not fully developed. उनका पूर्ण विकसित चेतना नहीं हुई है, इसलिए उनको ये छोड़ दिए। Then after that he becomes slowly responsible. धीरे धीरे वो जिम्मेदार होते जाते हैं। So and we are grown up, we have full intelligence, we have full capacity. How are we small children in front of Krishna? हम लोग की तो चेतना विकसित हो गई है और भगवान ने हमको शास्त्र दिए हैं, गुरु दिए हैं, वैष्णव दिए हैं,
For a mother, even her grown-up child will always be her lala. You know. जैसे माता के लिए बड़ा व्यक्ति हो जाता है तो भी उनके लिए वो छोटा ही रहता है. Still, but it doesn't mean that he is a small. If he acts like a baby, then he's nonsense fellow. लेकिन उससे अगर कुछ करे तो माँ उसको ऐसे छोटा बालक देकर नहीं दिखेगी, है ना? हालांकि अगर वो छोटा बालक से प्यार करेगी, लेकिन बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से अपने माँ का ध्यान रखे. Anything else? ठीक है, तो चले तो अभी हम ये सब तो हम सब यहाँ पर विराम लेते हैं. आज 4 चर्चाएं क्लासेस. तो अभी हम सब मिलकर प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करेंगे. बहुत सुंदर रूप से आज के विषय वस्तु को हमने